ये रियासत एक मुश्किल में पड़ी है। उसका हिस्सा जो पाकिस्तान के पास है, वहाँ पे आज जुल्म हो रहा है। वहाँ कई लोग शहीद हो गए। वहाँ की खबरें पूरी तरह मालूम नहीं हैं। और तो मैं तो अपील करूँगा यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स कमेटी को कि उन्हें वहाँ जाना चाहिए और वहाँ देखना चाहिए कि उन लोगों के ऊपर कौन सी मुसीबतें आ रही हैं, कि हम लोगों को और सारी दुनिया को ये पता लगे कि वो किस मुसीबत में से गुजर रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पर इसकी जांच होनी चाहिए। इसलिए तो मैंने यूनाइटेड नेशन से कह रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ उनकी ह्यूमन राइट्स कमेटी से कि वो वहाँ जाएं और वहाँ की तहकीकात करें और अजाला करें वहाँ के लोगों की मुश्किलात का। Dr. Saab, Narendra Modi have completed 12 years. He becomes the first Prime Minister of India who crosses the Nehru's period also. Still going on. Nehru has been for 17 years. He's only been for 12 years. Still going on. Yes. It's a longer difference. How did you see the political stability of J&K? It is not stable. It will be stable when they realize that we are human beings and that we have joined India on those conditions, that those conditions should be reviewed and honor must be restored. What is the reason of instability? Their negligence of the state. So people are saying that national conference fails to address the grievances of the people of Jammu and Kashmir. They will always say this. This is the second year of the Jammu. They don't realize the difficulties in which we are working. The powers are divided. His Excellency has most of the powers when he should not have those powers. He's just a nominee from Delhi. In shape of LG? People have elected government here. Elected government should have the powers, not the LG. डॉक्टर साहब, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस सभी पार्टी को इनवाइट करेगी प्रोटेस्ट करने के लिए स्टेटहुड को लेकर जो दिल्ली में होने जा रहा है? किसको? सभी पार्टियों को, जो जम्मू कश्मीर की पार्टी वो खुद आए, हम क्यों इनवाइट करें? जो मॉनसून पे हो रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम है। देखिए जनाब, हम लोग जा रहे हैं, जिनको आना होगा वो आए। हम किसी को थाली लेकर नहीं जाएंगे कि आप आइए। Will Jammu and Kashmir will get back identity which they have lost? I'm not God. Only Allah knows it. And the people who are in power in Delhi. But national conference will fight for that. We're already fighting. What more do you want? We're not silent. We'll continue to fight. That is what we constitutionally have the right to protest for what they have taken from us. So, what more do you, Abdullah, to say about it? All united as far as statehood is concerned.